Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Me, Kausar Umar, is here to teach you General Science of Class 4, Unit number 4. I hope you all will be fine and will be missing the school. This lecture series is actually bridging the distance between us. If you listen them carefully, they will fulfill your needs and overcome your deficiencies. Contents of the lecture. It is a briefing about the lecture telling us what we are going to do. यानी हम इस लेक्चर में क्या कुछ करेंगे. Number 1 is learning objectives. Number 2, pronunciation of terms. Number 3, explanation of main points. Number 4, tasks to do. Number 5, feedback. Learning objectives यानी हम इस लेक्चर में क्या कुछ सीखेंगे. In this lecture we will learn about what is a cell यानी सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल कैसा बना होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल यानी जानवरों और पौधों के सेल में फर्क और इनकी मुश्तरका यानी कॉमन चीजें क्या हैं. प्रोनाउंसिएशन ऑफ टर्म्स. डियर किड्स, चूंकि इस लेसन में कुछ टर्म्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए आइए हम इनको प्रोनाउंस करना सीखते हैं. नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन. नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट. नंबर 3 न्यूक्लियस. नंबर 4 साइटोप्लाज्म. नंबर 5 वैक्यूल. नंबर 6 सेल वॉल. Number 7 pigment. Number 8 chlorophyll. Explanation of main points. Surely you all know about living things and their types. For example, animals, plants and human beings. आपको जिंदा चीजों यानी कि जानदार अशिया की कुछ खुसूसियात के बारे में भी पता होगा. आपके लिए ये बात बहुत दिलचस्पी का बायस होगी कि तमाम जानदार अशिया सेल से बनती हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज अ सेल यानी सेल क्या होता है. द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड सेल्स. इट मीन्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. यू कैन ऑल्सो से दैट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, your friends and even your pets and plants are made up of cells. So cell is the basic unit of life. Structure of cell. Cell क्या होता है? सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जिस तरह एक घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और ये सब एक बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद होते हैं. इस वॉल को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के 3 अहम काम होते हैं. नंबर 1, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल यानी ये सेल की हिफाजत करती है. नंबर 2, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स गेटिंग इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. ये सेल के अंदर आने और बाहर निकलने वाले मटेरियल्स को कंट्रोल करती है. इट गिव्स शेप टू द सेल. सेल को एक खास शक्ल देती है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. बच्चों, सेल के अंदर एक गोल सा न्यूक्लियस मौजूद होता है. इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल. इसलिए हम न्यूक्लियस को सेल का दिमाग यानी ब्रेन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. माय डियर किड्स, आप लोग जेली से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं. तो ये साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है. इसकी वजह से सेल ड्राई नहीं होता और तमाम ऑर्गेनेल्स इसके अंदर फ्लोट करते हुए अपना काम सर अंजाम देते हैं. नेक्स्ट इज वैक्यूल. इट स्टोर्स मटेरियल. It is just like a storehouse of the cell. It stores food, water,
and waste substances. And the next organelle is chloroplast. ये ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है और ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं. They are green in color due to the chlorophyll. क्लोरोफिल का काम सनलाइट को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स को फूड की तैयारी में मदद देना है. And the last one is cell wall. It is another boundary wall found only in the plant cells. It also helps and protects and supports the plant cell. It is made up of cellulose, which is a tough material. Similarities and differences of animal and plant cell. Students, have you noticed some differences between animal and plant cell? Who are quite prominent? Presence of cell wall and presence of chloroplast. Both are found only in plant cells. Animal cells are lacking them. Another difference you can feel here is the presence of a large vacuole in the center of plant cell, while animal cells have multiple small vacuoles. Both of animal and plant cell contain cell membrane, cytoplasm, nucleus, and vacuoles. Feedback. Students, I am giving you some questions. You can assess yourself how much you have learned from this lecture. Number one question is, enlist the parts of animal and plant cell. आपको एनिमल और प्लांट सेल्स के तमाम पार्ट्स की एक लिस्ट बनाना होगी. नंबर 2 इज राइट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. आपको सेल मेम्ब्रेन के तमाम फंक्शंस लिखना है. नंबर 3 इज राइट डिफरेंसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. एनिमल और प्लांट सेल के फर्क को आपने लिखना है. Task to do. Students, you have to take your copies and draw animal and plant cells and label them. Number 2 is search out different types of animal and plant cells over the internet, just like muscle cells, skin cell, blood cell, nerve cell, and draw them in your notebooks also. आपको इंटरनेट के ऊपर इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को सर्च करना है और उनकी पिक्चर्स को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है. इसके अलावा प्लांट सेल्स को भी आप सर्च कर सकते हैं, उनको भी ड्रॉ करें अपनी नोटबुक्स के अंदर. ये आपका एक होम असाइनमेंट है. आई होप यू हैव अटेंडेड द लेक्चर केयरफुली. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय देन, फी अमानिल्लाह.